On the 2nd of December 2025, WION held the third season of its flagship initiative, Mission Sustainability, No Action, Not an Option, in New Delhi. Ladies and gentlemen, good afternoon, namaskar. A very warm welcome to the third edition of WION Mission Sustainability Summit. The on-ground event brought together visionaries, policymakers and innovators to address the most challenging environmental concerns of our times. The day-long program was focused on driving impactful discourses around climate resilience and sustainable development. One of the sessions was on how we can fix the plastic problem across the world. Every year, up to 23 million tons of plastic leak into our rivers, lakes and oceans. A planetary spill that poisons ecosystems, and the world still lacks a binding agreement to stop it. In August 2025, nations failed again to agree on a global treaty. One question divides the world. Do we cut plastic production itself, or do we fix the way we use, reuse and recycle it? To discuss, let's meet our panelists. The panelists for this topic were Ranbir Tanwar, known as the Pond Man of India. Bimlendu Jha, founder Swecha. And Bharti Chaturvedi, founder and director Chintan. Let's listen in to what was discussed by the panelists at the first session of Mission Sustainability 2025. If we know the answer to the problem, then why is it so difficult to actually get there? And I want to ask each one of you to actually comment on that, starting with you, Bharti. There is only one solution, and that is to drastically reduce plastic. And there is really no other solution. I mean, recycling is not a solution. Recycling is a delaying tactic. Because you can recycle plastic, but the fact is, firstly, plastic can only be recycled a certain number of times, between 3 and 5 at best. Secondly, you lose a lot of the material while recycling, and in any case, you have leakages into the ecosystem even while recycling. In fact, the fleece vests that we all wear in the winter, a lot of that is recycled PET, but when you wash it, you have those little microfibers of plastic which actually go out into the air as well as the nala and finally the rivers. We firstly have materials that cannot be recycled, and then we have recycling of materials, which is a temporary solution. So until you have money invested in making alternatives, which don't have to be material alternatives, we could come up with ideas around reuse and service provision instead of constantly buying and all of that. We are not going to reduce plastics. I want to come to you, Bimlendu, to just talk about what Bharti just mentioned. The safest plastic on this planet is the plastic that is not even manufactured. If you look at the amount of money or the production industry of plastic is so huge that, all of us are actually counting several million tons of plastic waste, and out of that 40% not being even collected, 30% really being recycled, so on and so forth. These numbers are of very little consequence unless and until we don't really stop the production. But also at an institutional level, it serves the purpose to keep plastic linear. Unless and until it doesn't pinch the producer and cause them inconvenience, selling us convenience in short term and catastrophe in the long term is the problem. I want to also get in Ranbir ji on this. अगर हम ecosystem की बात करें, marine life पे जो impact होता है, जो हमने images भी देखी हैं, plastic objects strangulating our marine life, very haunting images. बिल्कुल देखिए, चाहे वो marine life की बात हो, although I'm working for ponds, not at big level of sea, so but मरीन लाइफ की पिक्चर्स मार्केट में इसलिए आ जाती हैं क्योंकि वहाँ तक मीडिया की या जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स की उनकी रीच होती है. बट हर गली के पास या हर मोहल्ले में, हर गांव, हर शहर में 10-10, 15-15 पॉन्ड्स हैं जिनको मिलाकर शायद एक समुंदर बन जाए. लेकिन वो सारे पॉन्ड्स, लेकिन वो सारे पॉन्ड्स भी किसी लैंडफिल साइट से ज़्यादा अच्छी शेप में नहीं है.
है ना. इवन आप दिल्ली में भी देखेंगे तो मोर देन थाउजेंड्स वाटर बॉडीज हुआ करते थे, बट अगर आप गुड शेप में अगर किसी पॉन्ड को गिनेंगे आज भी तो 100-200 से ज़्यादा अच्छे पॉन्ड्स नहीं निकलेंगे. और सब में पहले वो धीरे धीरे डंप किया गया गार्बेज, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको ढक दिया गया. दे हैव बीन लाइक डंप्ड, है ना. सो और हम जब पॉन्ड को क्लीन करते हैं सो मैक्सिमम अमाउंट उसमें प्लास्टिक की ही निकलती है, प्लास्टिक एंड स्लज. और प्लास्टिक में भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो स्पेशली नॉट बॉटल्स, है ना, बॉटल्स के अलावा जो चिप्स के पैकेट हैं, जो कुरकुरे के पैकेट्स हैं, जो शैम्पू के पैकेट्स हैं, जो जिसको हम थैली कहते हैं, सो वो पन्नी जिसको हम कहते हैं, वो सारे पैकेट्स हैं. मेरी नज़र में क्या है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तभी हासिल हो सकती है जब उसको सोशल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी के साथ लिंक किया जाए. अभी मैं देखता हूँ घर के बाहर सुबह सुबह रैक पिकर्स आते हैं, है ना, और वो जो प्लास्टिक की बॉटल्स होते हैं, कांच होते हैं, उनको सब लेके जाते हैं. एक भी नहीं मिलेगा पूरी गली में, लेकिन वो पाउच को छोड़ जाते हैं, वो पन्नी को छोड़ जाते हैं, वो छोटे छोटे रैपर्स को छोड़ जाते हैं. क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि उसमें उनकी इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी नहीं है. अगर उसकी कॉस्ट भी उनको अच्छी मिल जाए मार्केट में तो एक भी पाउच नहीं छोड़े वो, जैसे बॉटल्स को नहीं छोड़ते. अगर समाज मुझे बैम्बू की बॉटल या मिट्टी वाली जो बॉटल है उससे मुझे ज़्यादा अच्छी नज़र से देखेगा उसकी बजाय कि जो प्लास्टिक की बोतल यूज करता है, तो मैं अपना आप ही मेरा समाज में कद बढ़ेगा और मैं उसको ज़्यादा यूज करना चाहूँगा. जब उनको लगेगा कि हाँ यार हमको कम इज्जत से देखा जा रहा है बाकायदा उनके कि जो नहीं यूज कर रहे हैं, तो अपने आप ही लोग यूज करना बंद कर देंगे. What can individuals do at their level when it comes to segregation of waste? There's so much that's been talked about. Although I feel that citizens should do two things. एक तो अपना segregate करो, compost करो. There are hundreds of alternatives to plastics and make a system. Carry a unfashionable bag, उसमें अपनी चीज़ें ले जाओ. But the other thing is कि लड़ो, भाई protest करो, आप सड़क पे आओ, fight with everything. You know, when you're talking about the policy makers and what we can do at the global level, we've obviously had a series of setbacks, you know, when it comes to even the UN global plastic treaty conversations, for example. You know, earlier on, the headlines splashed the world over, said deep divisions among the member countries and all of that. So if we take this to the macro scale, like you're saying, it's deeply unfortunate, of course, No, you don't that need those to gaps. just take your own laws. Extended producer, like what Vimlendu said, EPR. Every piece, जो आप बोल रहे थे ना, chips packets, the chip manufacturer by law is obliged to pick up that and recycle it. लेकिन आपने क्या किया है? एक तो आप उठाते नहीं क्योंकि आपके टारगेट्स ऐसे हैं कि आप 3-4 जगह से लेके अपने टारगेट्स फुलफिल कर लेते हैं क्योंकि you are not interested. And secondly, recycler makes money. जो वेस्ट पिकर है उसको तो फूटी कौड़ी नहीं मिलता, तो वो क्यों उठाएगा? जो जैसे आप बोल रहे थे, तो आपने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ऐसी चीज़ बना दी है दैट इट इज़ बिकम अ गेम ऑफ हाउ टू गेट क्रेडिट्स एंड अर्न मनी. इट इज़ बिकम अ लाइवलीहुड फॉर अ रिसाइकलर और अ वेस्ट टू एनर्जी डेवलपर वर्सेस अ वे टू क्लीन अप द कंट्री. तो आपने तो मजाक कर दिया है. दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज़ अ जोक. So that is what, we don't even have to go global. अपने ही में ठीक कर लें, बहुत होगा. What do you think about actually changing that? We always blame it as if, people are asking for it. What do we do? As in, it's not, people go to Sarojini Nagar or wherever and they say, oh, well, you know what? Give me one more plastic. As if every bagan could be in each single plastic would be such a great luxury. In all of this, we forget that plastic is not a behavior problem. A lot of times, the soft peddling, what Bharti was also talking about, that a lot of times we run, and of course for 40 years, for God's sake, we've been running this campaign or longer, say no to plastic bag. We of course in 2022 banned single-use plastic. But is there that ban on single-use plastic? How, and somebody's supplying it. Easy would be ban plastic, simple, and make sure that it is done. In one breath, we call ourselves intellectual and people who know what is what, and then ignore the harsh reality and blame it and pin it on behavior when it is an institutional
crisis, when that corporations, that institutions, what Bharti was talking about or what I mentioned earlier, if there is a law called extended producer's responsibility, why should it just become so customary? Why should it just be an academic process? Why should it just be a compliance formality and not about return? You know, I think in all of this, there needs to be certain, what Bharti said in terms of ground-up demand, but also top-down understanding that idea of a great nation or a great society has to be understanding of what is sustainable. आपके एक्सपीरियंस में क्या वो challenges रहे हैं जो ये understanding का gap है और the efforts जो आपने लिए हैं उसको बदलने के लिए? हमने जब इनिशिएटिव शुरू किया था तो वी लॉट्स हैव यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, है ना, बट वो धीरे धीरे कुछ चैलेंजेस ओवरकम होने लगे. तो जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वो दोनों वेज में काम करती है ना. सो वो टेक्नोलॉजी चैलेंजेस को कम करने के लिए भी काम करती है, लेकिन पैरेलली नए चैलेंजेस भी क्रिएट करती है. सो वही प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ भी हुआ है. जहाँ तक हमारे एफर्ट्स की बात है, हम मल्टी लेवल पे एफर्ट्स करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो हम अपने सोशल मीडिया रीच के थ्रू कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे और क्या सस्टेनेबल वेज हैं उन लोगों को हम बताएं एट द ग्रास रूट लेवल, है ना. क्योंकि जो एक टिपिकल रूरल गांव में रह रहे हैं और जो शहर में रह रहे हैं, है ना, आप गांव में जाएंगे शायद उनको सस्टेनेबिलिटी वर्ड आज तक उन्होंने जीवन में एक बार भी ना बोला हो, है ना, बट उनका कार्बन फुटप्रिंट हमसे 40 टाइम्स कम है ना. तो सिर्फ मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब वो नहीं है कि जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में जानते हैं वही ज़्यादा सस्टेनेबल है, जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में आज तक सुना भी नहीं है वो ज़्यादा सस्टेनेबल है. ऊपर लेवल पे टर्म्स तो आते जाते रहेंगे, है ना, और वो नई मार्केट क्रिएट करने के लिए लाए जाते हैं वर्ड. पहले क्योंकि आज से मैं 8-10 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो एक ओजोन लेयर था, है ना, वो हर जगह वही पढ़ाया जा रहा था, हर इवेंट में वही बोला जा रहा था. फिर लेकिन अचानक से वो ओजोन लेयर गायब हो गई मार्केट से. वो या तो किसी ने सिल दी सुई से या कुछ हो गया उसका, बट वो उसके बाद में उसका कोई चर्चा नहीं हुआ. उसके बाद में SDG गोल्स आए, फिर क्लाइमेट चेंज आया, फिर ये आया. तो ये तो हर साल नए आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ग्राउंड पे क्या है हमें वो उनसे जाके समझनी पड़ेगी. और जहाँ तक हम और देखिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं है ना, जहाँ तक अगर मैं, लेकिन उसको यूज कितना करना है, कहाँ करना है, वो हमें देखना है. अगर अभी बाढ़ आ जाए, मेरे शहर में आ जाए, गाँव में आ जाए, तो बाढ़ आ जाएगी तो मैं सबसे पहले जाके छत पे बैठूंगा, है ना, और छत पे बैठ के अगर 2 दिन तक कोई नहीं आया तो मैं 2 दिन बाद हेलीकॉप्टर का वेट करूंगा जो प्लास्टिक की बोतल पानी गिराएगी मेरे ऊपर, है ना, उसी प्लास्टिक की बोतल का मैं वेट करूंगा. तो हर चीज़ का इनोवेशन किसी ना किसी पर्पज़ के लिए हुआ है, लेकिन कितना करना है वो उनको समझाना है हमें. I want to understand from you if there is one thing that we take away today when it comes to sitting up and just taking notice that this is how urgent this crisis is and how time is running out. If there's something that you would want to, put out there. So, I'm a firm believer of this concept called there cannot be private solution to public problems, right? You can't treat, when you need surgery, you can't be chewing paracetamol. So it's a grave situation, and therefore we all will have to do something about it. And when we say we, it's our governments. Largely, if the government starts only enforcing the laws that it's made for the country with regard to be it municipal waste rules or EPR or with regard to plastic, maybe 50 to 60% of the problem will be gone. Problem of waste management is not burning the waste. Waste to energy is the other big issue that we all are getting into, and educated people are actually signing up for it or giving a great go ahead because a lot of places are now building incinerators. You all need to go and read about this because there will be a fancy one-page ad telling you that Delhi's waste has disappeared. 10,000 metric tons every day that we're talking about. Why? Or maybe perhaps more, because now we have these fancy waste-to-energy plants. And why not just in Delhi, everywhere? And what is waste-to-energy plant? It's basically incinerating waste at high temperature, burning waste at high temperature, making them into fumes and toxic gases that you inhale and then you die. You die a little early,
your medical bill increases a little bit. Till 3 years ago, every third child had asthma in Delhi. Now, a report that came this year said, no, every second one has it. Those numbers should scare us and beware us and make us formulate some kind of a policy and action. I think, we have something called Central Pollution Control Board and State Pollution Control Boards. Largely, the responsibility of governance is not of the courts. It's of the government bodies, the central government, the state government. They need to start, and there's 50% vacancy, by the way, in our pollution control boards. The only institution that is supposed to be keeping a check on countries' pollution or emission or on whether individual or institutions are following laws are these pollution control boards, and they don't have people, they don't have money, they don't have machines. So, a lot of times we ask, right, that how come other countries are doing well? They also became 5 trillion and 20 trillion economies because they actually worked in strengthening checks and balances. That's the priority that we need to ask, and I'm so glad that you ask that question every night on your channel. And there are many people who are actually asking that in media, and there are many children who are asking those questions on the street, that why is my lung stunted? Who is accountable? Is my mother or my mother's womb or my father's sperm or this government's air? Who is making my lung so stunted? And it's not as if it's stunted by 10% now, and the next year it will be stunted by 30%, and sab changa si. One of the questions that we actually got from our viewers was to do with the ethical challenges. We've, of course, discussed the challenges, but the ethical concerns, one of the viewers has asked, when it comes to this strive towards sustainability, if you would like to take that. Our human lungs and human breast milk has been found to contain plastics. So, what can be worse? So I think there's the ethical notion of when do you say I've made enough money, and let me not be in a hurry to make so much money compromising the quality of this planet and dignity and safety of people. And I think the number one thing that we want from every product, whether it is a shampoo, or whether it is your shoes, or whether it is, the road, you want safety. In fact, that's what we say, the ancient governments only existed because they were trying to give safety historically. That's the number one job of a government. That's why, we particularly honor our armed forces, because they keep our borders and our safety intact. But on the other hand, brands are not expected to do it, but brands are supposed to keep us safe by not poisoning our waters. And I think that is a huge that's a huge imperative, and that is what ethics is about. And I'm afraid they never had the ethics to begin with, because otherwise we wouldn't have had a plastic problem. But jo laws aaye isko control karne ke liye, those laws also seem to have not had the impact, because it is like the government has to behave like a thanedar going after them. Kariye, uthaiye ye plastic. Where is the companies, or the many companies, small and big, their own imperative? Ki it is our ethical duty not to let, my chips packets, microplastics lie in a pond. I'm a bird watcher. I go all over this country to the most remote parts, to the Burma-India border. Wahan bhi, there's only one thing that spoils the landscape, और वो एक chips का packet होगा. So if you think it doesn't matter, कि in the most beautiful forest, there is your packet, और आप नहीं उठाएंगे क्योंकि expensive है, inconvenient है, ना ही आप invest कर रहे हैं. कितने साल हो गए अब? 10 साल से we've been doing EPR. You are not investing in pulling up some new material, some other form of retail. Then I'm sorry to say that you have a business without any ethics. It is not good enough to fund NGOs. कि बॉस आपको पैसे दे दिए, आप ये प्रोजेक्ट करो. भाई, projects and NGOs have a huge limitation. It is business itself which should change. And if this policy doesn't change, doesn't make them change, and all the time the government has to push them and
punish them and shout at them and monitor them on a portal, then it's a really sad state of things. रामवीर जी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी. एक थॉट जो आप शेयर करना चाहेंगे, द मैसेज दैट यू वांट टू पुट आउट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म टू दोज हु आर वाचिंग, and something that you would want the world to be reminded about. आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पढ़ के देखिए, उसमें 3-4 नाम लिखे रहते हैं हमेशा, है ना. प्रोड्यूस्ड बाय, मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस, मार्केटेड बाय दिस एंड कंज्यूम्ड बाय अस, है ना. तो उस तरह से उस पर लास्ट वाला नहीं लिखा होगा. तो ये है कि मतलब शुरू से लेके एंड तक सभी की कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और बचा सिटीजन्स की, तो वो मतलब हम उन पे भी नहीं टाल सकते, हम हमेशा दूसरे की गलती नहीं निकाल सकते. हम सबकी भी जिम्मेदारी, लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है. और अवेयरनेस के साथ साथ हमें एक ऑप्शंस की भी ज़रूरत है. क्योंकि जब आप मार्केट में देखिए, हमेशा जो चीज़ सस्ती होगी वही कोई भी जो सड़क पे चलता हुआ आदमी है, जो मार्केट में आदमी घूम रहा है, वो वही उठाएगा. तो अब वो सरकार की जिम्मेदारी है कि आप किस चीज़ को सस्ता कर रहे हैं, किस चीज़ को महंगा कर रहे हैं. आप जाके आसपास के पॉन्ड को जाके साफ़ करें, प्लास्टिक निकालें. नॉर्मली मैं क्या देखता हूँ, 1 स्क्वायर मीटर में 4 से 5 किलो प्लास्टिक निकल जाता है ना, पॉन्ड में साल भर में. तो अगर आप साल भर में 5 किलो प्लास्टिक, अपने जो चिप्स, कुरकुरे या जो भी आप टॉफ़ी खा रहे हैं, अगर आप 5 किलो प्लास्टिक इकट्ठा कर लेते हैं, तो दैट मीन्स यू हैव क्लीन 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड. सोशल सस्टेनेबिलिटी हमें पहले लोगों को देनी पड़ेगी. जो लोग इस रास्ते आ रहे हैं या जो लोग सस्टेनेबिलिटी का रास्ता अपना रहे हैं, उनको कैसे हम प्रेज कर सकते हैं, जैसे कैसे उनको समाज में हम एक अलग इज्जत दे सकते हैं, तभी वो आएंगे. क्योंकि समाज अपने आप किसी डायरेक्शन में नहीं जाता. समाज को किसी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए पहले उसी समाज से कुछ लोग उठाए जाते हैं, उनको एक नया तबका या पद्मश्री या पद्म भूषण दिए जाते हैं, फिर उनको बोला जाता है कि अब समाज को इस तरफ मोड़ो आप. फिर वो चिप्स के कुरकुरे लेके टीवी पे खड़े होते हैं, तो समाज अपने आप उस तरफ मुड़ जाता है. तो इसलिए हमें समाज को एक डायरेक्शन में मोड़ने के लिए उनको कुछ एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देना पड़ेगा, अपने आप ही मुड़ने लगेंगे वो. ये जो आपने टर्म यूज़ करी, पॉन्ड वॉरियर्स, hoping that that's just a part of the many ways in which we can move the conversation forward and hopefully arrive at a stage where we are going beyond just having conversations and talking about the real need for action. I want to thank each one of you for sharing your thoughts and your perspectives. Like we've been saying, no action, not an option.